All right, so it doesn't seem to be working. And what we were supposed to do was it was going to be like a podcast, like interview or something. I would have asked questions, I would have answered them. But that our internet's not letting us do that. So I think I'll just monologue the hell out of this. And where do we begin? Okay, so this session is about trying to increase your phone's life, right? अब इसमें जो 90% of the part है वो हम लोग बात करेंगे on how to increase our phone's battery life because that is actually what's important here. As far as the hardware is concerned, yes, there are like a few ways we can do this, but at the end of the day, like most people that I've seen, they change their phones because their batteries got really bad and terrible. Acha, so I'm saying one last try. Let's try to see if we can get him in. If not, we'll be monologuing this. All right, I've accepted his request. आई थिंक अब चल रहा है थैंक गुडनेस कैसे हो भाई मैं ठीक ठाक तुम सुनाओ गुड सॉरी पहले सबको बहुत मसले चलते रहे लेकिन अब हो गया um, हाँ तुमने आई थिंक शुरू तो कर दी थी डिस्कशन अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे तो आई थिंक इसी पे हम मैं पहला सवाल आई गेस दे देता हूँ एंड देन यू कैन काइंड ऑफ गो ऑन अबाउट इट तो जहां तक फोन बैटरी एक्सटेंड करने की बात करते हैं पहले तो आई थिंक इफ यू कुड गिव थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑन फोन की बैटरी एग्जैक्टली ऑपरेट किस तरह से करती है लाइक ताकि उनको लोगों को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिले एज टू वाई जो हम आगे स्टेप्स बता रहे हैं या सजेशंस दे रहे हैं उनसे इफेक्ट पड़ता है आपकी बैटरी पे सो अगर इसके ऊपर थोड़ी सी अगर बात करें ठीक है ओके सो आपकी बैटरी जो है ना अगर आप लोगों को केमिस्ट्री थोड़ी सी याद है और हमको याद होगी सो अगर आप लोगों की जो बैटरी है बेसिकली the way that works is a positive side and then there's a negative. Okay, so with the positive side, what happens is you plug in your phone, electrons go from like the negative side to the positive side, and that's considered charging your phone. And then as you use your phone throughout the day, electrons go from the positive side way back to the negative side. ठीक है? अब ये आपको okay, so this is happening, right? Now what happens is that having too many electrons on either side of the battery isn't good for it. ठीक है क्योंकि कोई भी साइड आप नहीं चाहते कि ज्यादा उधर वेट हो इन चीजों का. So what you're going to want to do is you're not going to want to charge your phone above 80%, but 80% is a little impractical for people. I understand. मैं खुद 80 नहीं करता, मैं 90 करता हूँ. But 90 से ऊपर तो will be absolutely no way. My phone's been with me for more than 7 months now and it's at 100%. Alhamdulillah, I know people with similar phones उनका 97 96% पे है. So like एक तो 90 के ऊपर नहीं आने देता, दूसरा 30 से नीचे नहीं आने देता, because again वही बात, you don't really want this negative side, right? So with that considering, like how you charge your phone really matters. Don't go over 90, don't go under 30, number one. ठीक है. अच्छा, अब number 2 आ जाता है. When the electrons are passing to either of the sides, they go through a solution of chemicals. ठीक है. अब वो जो solution है ना, उसको पता है क्या चीज खराब करती है? Heat. Heat ruins those solutions, which will ruin the effectivity of your battery. उसके अंदर अब factor ये आ जाता है, like when you're charging your phone, try to do it in a way कि आप ही कमरे में हो, AC या पंखा चल रहा है, ताकि आपका phone overheat ना हो जाए. If you're using fast charging, वरना आप कोशिश करें कि आप slow charging use कर लें. कोशिश करें 30-40 पे ही phone charge कर लें, because your battery is kind of like a sponge. The more power, like the lighter it is, the more power it will take. ठीक है, तो वो ज्यादा तेजी से चार्ज होगा, तो क्या consequence से phone गर्म हो जाएगा. Try to keep your phone cool. उसके यही तरीके हैं. Don't let it go under 30. Maybe have your case off if it's a hefty case. Try to use slow charging. If not, that's fine too. But case off करके पंखा चला लें. And try to charge your phone in a way कि अगर 50 पे भी है लेकिन आप रात में कमरे में बैठे हुए हैं, पंखा चल रहा है, तो आप लगा लें. क्या जाता है? 80 पे कर लें, 70 पे कर लें. You know, these are some measures that you can take. एक तो ये. अच्छा, अब heat की हमने बात की है. So one of the biggest sources of heat क्या है? Sunlight, right? And when you're using your phone in the sun आपके phone की brightness भी ऊपर हो जाती है, and so that also heats up your phone a lot. So that's also dangerous.
So all these things combined, all in all, like आप इन चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी बैटरी सही रहेगी. Yeah, वही ना, like there is this, I don't know if it's a saying or something, but at least heat is like cancer for your phone. So it's literally like your phone is going to die a slow death if आप जितना ज़्यादा रहेंगे. So हाँ, I think that's something to take away. वैसे इस पे मेरा एक सवाल ये आता है, I mean, हीट से अगर impact इतना होता है आपकी बैटरी को, and this is not just of course for a phone battery, the same goes for your laptop or your or other devices. क्या For cold sure. weather या cold climates का भी उतना ही नुकसान होता है क्या? नहीं, एक्चुअली नो. हाँ, एक बात है, व्हेन यूर इन अ कोल्ड प्लेस, जैसे मैं था, तो व्हाट हैपेंस इज कि आपका फोन कभी कभार 20 से एकदम 0 पे ड्रॉप कर जाए. या दैट्स अ लिटिल स्केरी, राइट, इजंट इट? बट इट्स एक्चुअली हार्मलेस. आपकी बैटरी बस इफेक्ट काम नहीं करती. हाँ, ऑब्वियसली फ्रीजर में ना रख देना फोन, या फिर कोल्ड में हो तो कोशिश करो कि Yeah. ज्यादा यूज ना करो, बट नॉट एज डेट्रीमेंटल एज हीट. Hmm. Which is by हाँ, the way that's fair something we need enough. to take Yeah. care of because we live in Pakistan. तो आपको इस चीज का एक्चुअली बहुत ख्याल रखना पड़ेगा. Yeah, yeah, go on. वही मैं कहने लगा था कि यू लिव इन पाकिस्तान, लाइक, so this is something that you need to take care of. कि बहुत ज्यादा गर्मी हो Hmm. जाती है तो कोशिश करो कि वेंटिलेटेड कमरा हो, पंखा चल रहा हो, कुछ चल रहा हो. वही बात, एक कमरे में Hmm. बैठे हुए हो, एसी चल रहा था, तो माइट एज वेल जस्ट दैट. हाँ, एंड आई थिंक ये आखिरी चीज को हम एक कवर कर सकते हैं बिफोर वी लाइक मूव टू एन एंड, दैट इज कि एक्चुअली इससे कितना फर्क पड़ता है. अब ऑनेस्टली मैं बताऊं तो आई एम रियली बैड एट लाइक चार्जिंग एंड आई एम रियली बैड एट लुकिंग आफ्टर माय फोन उस तरह से. तो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं करता इस तरह की चीजों का. पॉज बट फॉर अ सेकंड. अगर तुम लाइक से कोई फॉलो करता है तो कितना को फर्क पड़ जाता है, लाइक हाउ मच कैन यू एक्सटेंड योर फोन्स लाइफ? बिफोर वी गेट टू इट, मैंने पूछना था, यू एवर नोटिस्ड कि तुम्हारी बैटरी डे है? हाँ, आई डू नोटिस इट, बट यूजुअली मेरे जो फोन की बजट रेंज है इन द 30s, लाइक जस्ट अंडर 30. तो उनकी यूजुअली इतनी जबरदस्त बैटरी नहीं होती. एंड सो फॉर मी इट्स लाइक, मेरा ख्याल तो ये है ना कि वो वैसे ही ओवर टाइम डिग्रेड करेगी. बट या आई डोंट रियली हैव दैट, आई एम नॉट सो प्रोएक्टिव व्हेन इट कम्स टू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट. यार हाँ, लेकिन बैटरीज का पता है बजट से इतना ताल्लुक नहीं है, बिकॉज बैटरी टेक इज प्रीटी मच द सेम एवरीवेयर. तो 5 साल हाँ. पहले भी बैटरी वही थी जो आज है. But yeah, like I mean, you kind of just have to make sure you protect it, and you have to make sure that you take care of it, and you just kind of like, हाँ, तो I mean, यार, उससे पहले आपने क्वेश्चन पूछा था कि फोन की लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं. To that my answer would be कि like, I mean, कोई बहुत ज्यादा फिगर नहीं है, बट जैसे आई गिव हम्म. यू एन एग्जांपल ऑफ मी एंड माय सिस्टर, ठीक है. हम दोनों ने एक साथ ही फोन लिया था, एक साथ ही बेचा था अपना. वो स्लो चार्जर से करती थी, वो ख्याल रखती थी फोन का, और वो इतनी चीजें करती थी. मैं बहुत केयरलेस था अपने साथ. आई वॉज एक्सट्रीमली केयरलेस विद एवरीथिंग. एंड लाइक, so what happened was कि what ended up happening was कि जब फोन बेचने की बारी आई तो obviously बैटरी परसेंटेज लिखना जरूरी होता है, because it's very important हम्म. when you're selling. तो what ended up happening was उसकी 85 थी और मेरी 77 थी, even though my same phones थे, same हम्म. time पे आए थे. बट वो स्लो चार्जिंग लेती थी, और वो, हम्म. मैं तो चार्जिंग पे लगा के केस के अंदर फोन में पबजी खेल रहा होता था, गर्म हो जाता था. That's when I decided to start taking care of my products. तो as such, अच्छा, by the way, this is a 3-year period. तो मेरा 3 साल के बाद फोन जो है वो 77% ऑफ इट्स ओरिजिनल कैपेसिटी था, और मेरी बहन का 3 साल बाद वाज 85%, which is significantly better. तो आई मीन, आई एम नॉट हम्म. सेइंग कि आपका फोन अरसा चल जाएगा या कुछ, बट इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट. Even if you plan to change it in a couple of years, like what's the harm in having a good battery, right? Yeah, yeah. एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग जो मैंने आज सीखी है, एटलीस्ट आईफोन की हद तक. सो आईफोन के अंदर यू कैन एक्चुअली लुक एट योर
बैटरी हेल्थ, बट एंड्रॉयड फोन में अभी तक ये चीज़ आपको नहीं, तो इनकी एक्चुअली एंड्रॉयड की भी डिग्रेड होती है बैटरी लाइफ, बट यू जस्ट aren't able to see it. But the interesting thing I found out was कि iPhones में your phone actually learns the patterns जिसके मुताबिक आप अपना फोन चार्ज करते हैं. सो आप अगर एक रेगुलर टाइम पे अपना फोन चार्ज कर रहे हैं रोज, तो योर फोन विल बी एबल टू पिक अप दैट पैटर्न, और वो उसके मुताबिक फिर अपनी जो चार्जिंग साइकिल है उसको एडजस्ट करेगा. सो दैट वाज समथिंग लाइक रियली इंटरेस्टिंग. Yeah, for sure. या 80% तक चार्ज करता है, मैंने चार्ज हर रात एक ही टाइम पे सो और एक ही टाइम पे उठो. सो दोबारा आई बोलोगे डोंट नो, प्लीज? आई थिंक 80% चार्ज करता है एंड देन चार्ज नहीं करता, एंड लास्ट 30 मिनट्स के अंदर क्या कहते हैं, बिफोर यू वेक अप इट स्टार्ट्स चार्जिंग अगेन. या द प्रॉब्लम इज that you need या to wake up and sleep a similar time. I don't know anyone who does that anymore. या ये तो है, ये तो है. ट्रू. आई थिंक लेट्स आल्सो टेक लुक एट एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट्स. ठीक है. आई थिंक कोई रेलेवेंट सवाल नहीं है, सो वी कैन एंड द सेशन, बट Wait, आई थिंक ये एक जरूरी डिस्कशन थी. Arab, या I just want to say कि ये तो हमने बैटरी लाइफ की बात की है, फोन की बाकी लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. आप 50-60 हजार का अगर आप फोन लेते हो, देन यू शुड चीप आउट व्हेन इट कम्स टू फोन केसेस एंड एक्सेसरीज. अच्छा हेफ्टी केस लो, ग्लास प्रोटेक्टर रखो ताकि खुदा ना खास्ता गिर भी जाए, इट्स फाइन, राइट? अगर आपने 50,000 की चीज ली है तो आप 3-4 हजार खर्च के उसको बचा सकते हो. दैट्स अ गुड थिंग, राइट? तो बिल्कुल. एक तो फोन की लाइफ एक्सटेंड करने का. मेरा फोन कंप्लीटली स्क्रैचलेस था क्योंकि ग्लास प्रोटेक्टर और कवर हमेशा चला रहता था. एक तो ये आ गया फैक्ट. नंबर जो है आपका या जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि सम लाइक मोस्ट फोन्स नाउ आर IP68 वाटर रेजिस्टेंट. बट यार इसका ये मतलब नहीं है लेकिन नहाने घुस जाओ, पूल में घुस जाओ. इट्स टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम या एक्सीडेंट्स एंड स्प्लैशेस. Constantly expose it to water, it is going to start corroding the charging pin. तो ये दो चीजें हैं जिनका आप ख्याल रखना है. ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सही. कराची में रहते हो, किसी बीच वाले एरिया में रहते हो, तो डू मेक श्योर कि आपका फोन आपकी जेब में रहे if you go to the beach, because like sand is also terrible. Even if the manufacturer says it's sandproof, it might be, but sand is all in all terrible. In fact, मैंने अपना एक फोन खराब किया था, उसके अंदर में उसके चार्जिंग पोर्ट के अंदर मैंने गलती से सैंड घुस गई थी और वो चार्ज नहीं हो रहा था. पूरी सर्विस होनी पड़ी थी. And maybe just like it just kind of is a messy procedure, right? So you just got to be careful of all या these things. Like a big things that like you got to take care, right? Like हर साल नहीं ले सकते आप, तो you need to kind of make sure that you can get this thing to like run for at least 3-4 years. हाँ. आई मीन अगर आप कराची में हो तो आप वैसे प्रेफरेबली फोन ना ही निकालो, वैसे भी किसी भी सिचुएशन में, तो उसकी लाइफ बहुत एक्सटेंड हो सकती है. बट हैविंग सेड दैट, थैंक यू जिन्होंने ज्वाइन किया आज हमें. और हमारे इस तरह से सेशंस वीकली चलते रहेंगे, एंड आई होप यू कैन जॉइन अस नेक्स्ट वीक एज वेल टू टॉक अबाउट अनदर टेक रिलेटेड टॉपिक. आप लोग अगर कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट, बट दैट इज द एंड. So what, guys, हम लोग डिसाइड कर रहे हैं हम अगले हफ्ते क्या बात कर रहे हैं. You're gonna DM us and we're gonna see what the people want us to talk about, and then we're gonna talk about this. So after this live ends, DM us, tell us what you want us to talk about, और फिर हम उसकी बात करेंगे. हाँ हाँ बिल्कुल उसका होगा. सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. ख्याल रखें, एंड थैंक यू इब्राहिम फॉर जॉइनिंग अस अगेन. Of course, no worries, man. All right. ओके. Allah Hafiz, everyone. Take care.